अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आया हूँ अब्बोत्ताबाद और आज मैं जा रहा हूँ अब्बोत्ताबाद में मौजूद एक इंतहाई खूबसूरत तरनवाई आबशार में। वैसे तो यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को इस आबशार का नहीं पता, क्योंकि ये आबशार काफ़ी ढकी छुपी है लोगों से। तो आपको भी इधर लेके जाता हूँ और यहाँ के खूबसूरत नज़ारे दिखाता हूँ। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. ये हैं जी यहाँ के मज़े, पुरसकून जगह। और यार मेरे पीछे देख सकते हैं कुदरती पानी के चश्मे हैं, ठंडा बर्फ़ की तरह पानी है यहाँ का। और कोई आइडिया नहीं कि ये पानी कहाँ से आ रहा है, क्योंकि अभी हम आबशार से थोड़ा सा ऊपर आए हैं, क्योंकि हमें किसी ने बताया था कि यहाँ पे पानी का चश्मा भी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए आए हैं। अभी हम जा रहे हैं वापस आबशार की तरफ। We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. ये जी यहाँ की जामिया मस्जिद है और मस्जिद के बिल्कुल साथ ये रास्ता नीचे आबशार की तरफ जाता है। Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number. Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns. आबशार तक जाने का रास्ता बहुत ख़तरनाक है भाइयों, तंग रास्ता है, पथरीला, प्रॉपर रास्ता नहीं है। लेकिन यह है कि मकामी लोग यहाँ पे गाइड करने वाले काफ़ी अच्छे हैं, तो आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी इधर पहुँचने में। ये है जी आबशार का रास्ता और नीचे हमें आए पानी की आवाज़ तो आ रही है। अब तो ये पास जाके ही पता लगेगा कि ये आवाज़ आबशार की है या किसी और चीज़ की है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. 15 से 20 मिनट की हाइकिंग है ऊपर मस्जिद से नीचे वाटरफॉल तक आने की, लेकिन रास्ता थोड़ा सा पथरीला है तो काफ़ी एहतियात करनी पड़ेगी। And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
लो जी, आबशार पे तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ पे पानी का प्रेशर इंतहाई ज़्यादा है और ऊपर जाने का रास्ता भी कोई नहीं है, तो जिसकी वजह से हम आगे नहीं जा सकते। लेकिन यह है कि ये बड़ी ज़बरदस्त जगह है। फैमिली प्लेस तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन अगर आप दोस्तों के साथ आना चाहें तो बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन गर्मियों में आएँ, क्योंकि इस टाइम यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि बारिशें हुई हैं, जिसकी वजह से पानी का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। लो जी, आबशार का टूर तो हमारा हो गया ख़त्म और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। मज़ा आ गया आबशार पे, लेकिन यह है कि रास्ता काफ़ी ख़तरनाक था और बारिशों की वजह से पानी का बहाव भी बहुत तेज़ था, जिसकी वजह से जो है ना आबशार के नज़दीक नहीं जा सके। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।